for hibernation for a long time. Of course, speaking of an incident in 2021 and says it was Mamta Banerjee. The heartland states late last year in Rajasthan, Chhattisgarh and South Foundation, I could be reading so pejoratively called cow belt, and those parts of Tamil Nadu around 53% वाला 73%. Sources said the incident happened To poor people, seeing this human was all like a man, one. But was also accused of sheltering Tamil separatists. This was determined by Yeah, Manipur and Naigiri Satan. I doubt so. Fast cannot be used only for social media. This has been misinterpreted. सोशल मीडिया पर तो स्मृति ईरानी के खिलाफ पति चोर ईरानी जैसा आवाज जा रही है तो सुनो। माता जी जब उन्होंने मोदी के परिवार पर उठाया था सवाल। स्मृति ईरानी ने किया चारा चोर वाला पलटवार। लालू की बेटी ने भी पति चोर बोलकर किया वार। कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता। राजनीति की तरह करनी चाहिए। नीतियों का विरोध करना चाहिए, नेताओं का विरोध करना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए, लेकिन किसी की निजी जिंदगी पर कोई घटिया टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर ये देश का दुर्भाग्य ही है कि मोदी की सत्ता से टक्कर नहीं ले पा रहे विपक्षी नेता अब उनकी निजी जिंदगी पर हमला बोलकर छिछले स्तर की राजनीति करने पर उतारू हो गए। और दुर्भाग्य से इस तरह की राजनीति की शुरुआत लालू यादव जैसे मंझे हुए नेता ने की, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिनके पास लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करने की बजाय उन पर निजी हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि तुम बताओ तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं है, तुम्हारे पास तो परिवार ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। आरजेडी की कमान संभाले लालू यादव ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया, तो भला बीजेपी कैसे खामोश रहती। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला और लालू यादव को चारा चोर बोलकर जोरदार पलटवार किया। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया तो कांग्रेस ने उपहास उड़ाते हुए कहा चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो चाय वाला बना प्रधानमंत्री। और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है।
स्मृति ईरानी ने अपनी जुबान से लालू यादव का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ चारा चोर बोलकर तंज मारा। लेकिन ये बात तो पूरा देश जानता है कि लालू यादव चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर चारा चोर कहा जाता है और कहीं ना कहीं आरजेडी नेताओं को भी शायद ये बात पता है। इसलिए स्मृति ईरानी ने चारा चोर बोलकर तंज मारा तो पूरी आरजेडी में जैसे खलबली मची। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि छीन तोड़ उजाड़ के अपनी सहेली का सुहाग और घर परिवार मोहतरमा घर फोड़नी चली है प्रवचन देने। लालू की बेटी रोहिणी ने स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना उन पर कुछ इसी तरह से घटिया तंज मारा। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान तो इस कदर जुबानी मर्यादा लांघ गई कि स्मृति ईरानी के शरीर का मजाक उड़ाने से लेकर पति और बेटी तक को भी नहीं बख्शा। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो, भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की। अकड़ को औकात में रह कर के बोलो, वरना बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी है। कि जिस तरह से लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर हमला बोलने की घटिया राजनीति की, उसी तरह की राजनीति उनकी बेटी रोहिणी और पार्टी की नेता सारिका पासवान भी कर रही हैं। और ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। सोशल मीडिया पर तो स्मृति ईरानी के खिलाफ पति चोर ईरानी जैसा घटिया हैशटैग भी चलाया गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी की चारा चोर वाली बात से आरजेडी में किस कदर खलबली मची हुई है। बहरहाल राजनीति में नीतियों पर बात करने की बजाय जिस तरह स्मृति ईरानी की बॉडी शेमिंग की गई, उनके परिवार पर भी घटिया बयानबाजी की गई, इस तरह की राजनीति पर आपका क्या कहना है? Mr. M.K. Stalin went on to great lengths to explain that this has been misinterpreted. Pramod, what is the Chief Minister now going to say, given that his party colleague and Member of Parliament, A. Raja, has made statements of this nature? How is he going to explain? Because Stalin did come out and say that, this has been misinterpreted. Clearly, in this case, some serious answering to do, isn't it? Is the reason for the global disease in the name of caste, dividing the people on the caste line, dividing the people on the economic line by using the caste. Caste cannot be used only for social evil. It depends upon the economic evil also. Those who are living Indians in other countries also propagating caste in the name of Hindu religion. So Hindu religion is the biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. India is the reason for the global disease in the name of மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று, பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம், நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். We will never accept Bharat Mata ki Jai. Won't accept Jai Shri Ram. Tell them we are enemies of Lord Ram. We don't have faith in Ramayana. BJP is lashed out and motor mouth
A. Raja. Then we are enemies of Lord Ram. We don't have faith in Ramayana. BJP is lashed out at the motor mouth MP of the DMK, A. Raja, who in the past as well has stoked not one but several controversies when it comes to his comments against the கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால் இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால் இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால் அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. நீ வேணா சொல்லி பாரு, ராமனுக்கு எதிரி என்ன? ராமனுக்கு எதிரி எனக்கு தமிழ்நாடு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 4 பேர் அண்ணன் தம்பி ராமன் சீதை தேடிட்டு காட்டுக்கு போறான். வேட்டுவ இனத்துல குறவனாக இருக்கிற காட்டுல இருக்கிற குகன் வர்றான். குகன் ராமனை தொழுது தேனும் மீன் கொடுக்குறான். மீன் சாப்பிட மாட்டார் ராமர். ஆனால் அன்போடு தேனை வாங்கி கொண்டு தேனை சாப்பிட்டுட்டு மீனை நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி பக்கத்துல கொடுத்துட்டு அவன் சொல்றான், நாங்க 4 பேரு குகனோடு ஐவரானோங்கிறான். நீ வந்துட்டப்பா, நான் தம்பி, நீ குறவன், நீ வேட்டுவன், ஆனால் இவ்வளவு அன்போடு கானகத்தில் என்னை பார்த்து கொண்டாயே, நீ எனக்கு இனிமேல் 5வது சகோதரன். அப்புறம் போறான், சுக்ரீவன் வர்றான், போருக்கு துணை நிற்கிறான். குகனோடு ஐவரானோம், குன்று சூழ்வான் மகனோடு அறுவரானோங்கிறான். இந்த சுக்ரீவன் வந்தான், எனக்கு உதவி பண்ணான் சீதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இனிமேல் எனக்கு அண்ணன் தம்பி 6 பேர் ஆனான். அப்புறம் வந்தான் விபீஷணன் கடைசியா வந்து சேர்ந்தான் ராவணனை கொல்றதுக்கு. குகனோடு ஐவரானோம், குன்று சூழ்வான் மகனோடு அறுவரானோம், ஐயே நின்னோடு 7 பேரானோம். 7 பேரானோம் தம்பினா எந்த ஜாதி, எந்த மதம், எங்க பிறந்தான்? எனக்கு ராமாயணத்துல நம்பிக்கை இல்ல, ராமன் மீது நம்பிக்கை இல்ல. ஆனால் கதையை சொல்றேன், இதுதான் கம்பராமாயணம். அப்ப 4 பேரா அண்ணன் தம்பி பிறந்து ஒரு குறவரை, ஒரு வேட்டுவரை இன்னொரு சகோதரனாக, ஒரு குரங்கை இன்னொரு சகோதரனாக, இன்னொரு குரங்கை 6வது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் இடியட். இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப்கான்டினென்ட். என்ன காரணம்? இங்க தமிழ் ஒரு தேசம், ஒரு நாடு. மலையாளம் ஒரு மொழி, ஒரு தேசம், ஒரு நாடு. ஒரியா ஒரு தேசம், ஒரு மொழி, ஒரு நாடு. அப்ப இத்தனை தேசிய இனங்களையும் சேர்த்தால் இந்தியா. So India is not a country, it is a subcontinent. இங்க பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள், பண்பாடு உண்டு. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, கேரளாவுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, டெல்லிக்கு போனா ஒரு பண்பாடு, ஒரியாவுக்கு போனா ஒரு பண்பாடு. ஏன் மணிப்பூர்ல நாய்கறி சாப்பிட்டாங்க சொன்ன பாரதி உண்மைதான், இன்னமும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க, அது ஒரு பண்பாடு. Raja has exalted the idea of a Tamil nation, a separate homeland where Tamils drive their own destiny. Viewers, his words you have heard. You have heard his words, and viewers, it's unfortunate, but Raja's definition of nationhood is more akin to that put forth by ultra-nationalists. For example, the Nazi idea of nationhood that romanticized just one uber identity, the mythical, all-powerful, genetically unblemished Aryan race, for example. Tamil homeland that it not only nurtured the cause by extending moral and political support, but is also accused of sheltering Tamil separatists. This was determined by the Jain Commission in its report on Rajiv Gandhi assassination conspiracy. The Jain Commission indicted the DMK for colluding with LTTE, or the Tamil separatist group that waged a deadly uprising against the Sri Lankan Sinhalese government. Let's open this up, viewers. What to make of this, and is any action being taken by the DMK against these reactions, or will the Congress party step up? He's a real God. That's God reveals him as a man, human person, not like Sakti. Revelation of the Father. But he is not God. Who is he God? He is God. Jesus is also God. Son of God, and what is a God? Like water in 3 states: water in liquid form, and solid form, and gaseous form. The mystery of incarnation, he became that is Son of God, and also is a God. Another thing we are to see.
So Jesus Christ is a form of God. Is that right? He's a real God. He's a real God. That's been God revealed him as a man, human person, not like Sakti or this or. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. That's our faith. They do not understand the importance of debate, of dialogue, of interfaith dialogue. And this tradition is not new to India. This comes from the Sanatan tradition of engaging with people of different opinions, different thoughts, different streams of thought. That is what has enriched our civilization. इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। देखिए मजा। There's a very big decision taken today by the Congress Working Committee. Unanimously, the Working Committee has supported the idea of a caste census in the country. And I think it is a very, very progressive step, a very powerful step for the emancipation of the poor people in our country. We've also, our chief ministers are also believe that it's an important step for them to take. So our states are also considering this and actioning this step. The Congress President today chaired the meeting of the highest body of the Congress Party, and the entire Congress Party has decided that it is going to wholeheartedly not just support the idea of the caste census, but force the BJP to carry out the caste census or then get out of the way so we can carry out the caste census. क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका. Controversy erupted over Congress workers allegedly roughing up an India News journalist at Rai Bareli and the manner in which Rahul Gandhi quizzed him. Rahul was heard telling Congress workers not to assault the journalists and asking him the name of the owner of his TV channel. मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ? आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ. ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है. He further started asking if the owners of the TV channel is Dalit or OBC. Sources said the incident happened when the journalist was asking Congress workers not to remove his mic, and he asked Rahul why he was not being allowed to cover the event properly. This incident raked up a lot of criticism, followed by another subsequent row on his Aishwarya Rai comment. Meanwhile, the news media company in question has condemned this incident. Aishwarya Sharma, who heads Sunday Guardian, which is a part of the same group as India News, said, and I quote, "We are speaking to lawyers in our company. The caste slur asking the caste was also not proper. He is a reporter working for a long time. You, as in Rahul, can't provoke the crowd and then say, Mat maro, don't beat him." UP BJP MLA Shalabh Mani Tripathi swiped at Rahul Gandhi over this incident on X.
Press Club of India has also released a statement condemning the incident. Meanwhile, Congress dismissed the incident and said Rahul was only flagging the low representation of reserved categories in various sectors. Referred and repeatedly to actor Aishwarya Rai Bachchan, questioning the guest list of Ram Mandir consecration ceremony. He even stated that we could see Aishwarya Rai but not the OBCs during ceremony. But the fact is Aishwarya Rai was not at that ceremony. She didn't attend. Later, he then replaced the actor's name with Katrina Kaif. Here's a report. Stars gracing the Pran Pratishtha in Ayodhya. Rahul Gandhi directs his criticism at some of those in attendance. During his Bharat Jodo Nyaya Yatra in Uttar Pradesh, the Congress leader took aim at the Bachchans, using the platform to make a political statement about the OBCs. आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा ना? सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? अमिताभ बच्चन दिखा? ऐश्वर्या राय देखी? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं. Aishwarya Rai Bachchan did not attend the Pran Pratishtha, but Rahul Gandhi made her a focal point of his speeches. उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया. ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा. ओ देखो भैया ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है. करते जाओ भैया करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो. This led to a trending hashtag regarding Aishwarya Rai Bachchan. While there was no immediate response from Bollywood stars, criticism against Rahul Gandhi surged on social media for his remarks. का इनॉग्रेशन देखा, अमिताभ बच्चन दिखे और कौन दिखे उसमें आपको? कतरीना कैफ दिखी. 53% वाला, 73% वाला, सॉरी, वहां पे कोई नहीं था. Rahul Gandhi's remarks about Bollywood celebrities garner the spotlight online as he tours the pivotal state of Uttar Pradesh. नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में. यूपी के नौजवान नशेड़ी है. ये कैसी भाषा है भाई? जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं. परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा. पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना. लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं. कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है. ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं. अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है.
अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर The रहा है। north is now BJP dominated and the south is more accommodative of parties like the Congress. No, I think it's an artificial and a malicious and a politically motivated distinction, which I think is meant to sow the seeds of balkanization of Bharat on pseudo-ethnocentric lines, and I think this needs to be countered as soon as possible. According to me, this takes forward the same missionary template that was employed in the 18th and the 19th century to cleave the culture between Bharat, the north of Bharat and the south of Bharat. And I can say this with a fair degree of confidence, having read the literature carefully and deeply, that this is, according to me, Dravidianist expansionism from the south to the north in terms of their ideological presence. But isn't it a fact that barring Himachal Pradesh, at present, no state has a Congress government? All of them have decided to go to the BJP. But the same people, the same party managed to win Karnataka and then Telangana. See, the fact is that detail misses an important, let's say, aspect of the outcome, which is the rapid increase in the BJP's vote share in the south. And I'm saying this as a non-expert, let's say, observer of these aspects or of these developments. The kind of victory that BJP has seen in Telangana, I think on the ground needs to be seen to be believed. And if anybody witnesses the kind of crowds Sri Annamalai draws in Tamil Nadu, I would ask myself a simple question: what is the difference between the Hindi heartland, so to speak, or the pejoratively called cowbelt, and those parts of Tamil Nadu that have embraced Annamalai? So I think this is a binary which has no basis in reality. Is the voter in the north more right of center and the voters in the south more left of center, or completely left in the case of Kerala? Because empirically, that's what it looks like if you were to look at which party is in power in which state. See, I think it would be ahistoric to contend that Hindutva has not had an origin in the north of Vindhyas in terms of its historical origin, so to speak, or the way the movement has started. But to say that its appeal is limited only to the north of India, I'm sorry to say, is completely baseless. It has no basis whatsoever. BJP has occupied power in Karnataka at least since 2008 more than once. And in Mysore and coastal Karnataka, so to speak, these are what are called saffron strongholds or saffron bastions. So I don't think this argument makes sense whatsoever. And second, to say that people in the north are interested only in religion, they have nothing to do with language, they have nothing to do with culture, they have nothing to do with development. No, it doesn't make sense whatsoever. Anybody who visits Uttar Pradesh today will know for a fact that civilization and development go hand in hand. Sanskriti and Vikas go hand in places like Uttar Pradesh. So this argument, I don't think holds any water. Then what do you make of Maharashtra? So where do states like Maharashtra survive? Maharashtra and Gujarat are supposed to be not simply because they are above India's, but for all practical purposes, they are the west of India. They are not the Hindi heartland. They are not the cow belt. What do you make of those states? So I don't think that makes sense whatsoever to present a credible face which can actually reach out to the voters, particularly in a deeply religious state such as Kerala. That's a fact. And second, Kerala and Bengal almost mirror each other in the harsh realities of how battles are won, political battles are won in the streets or on the streets. So the presence of a Hindu vote base does not translate to, let's say, electoral victory unless you're able to project someone who can confidently inspire them to come out and vote for them. Because if you don't present that face, there are repercussions and there are, let's say, implications and consequences which have to be faced immediately, the way you saw in Bengal post-2021 election results. Now, I want to address the elephant in the room because, through this entire story that we see on social media by some politicians, the insinuation actually is this. When you say that, North Indian voters are saffronized, the insinuation is that those who are in the north are Islamophobic, hence they vote for the BJP. But those in the south are more communally, they're more secular, they're more communally amiable. Hence, they are rejecting the BJP's brand of politics and the Congress's mohabbat ki dukaan, as it were. What do they make of BJP's success in the old city of Hyderabad in the Telangana elections this time? In places which are heavily Muslim dominated, where, let's say, people like Raja Singh and his colleagues have succeeded significantly in areas like Bahadurpur and whatnot. What do you make of that success? I don't think people have actually read the history of the Ram movie to understand how much of contribution, both in terms of men and material, was made by the South to construction of the Ram Mandir in the mid-90s and the early 90s. As someone who's lived, or who hails from Hyderabad and who's lived in those tumultuous years, I know exactly how serious this issue was.
So any keen student of history will tell you that to say that the Hindu wave is limited to only the upper parts of Bharat and has nothing to do with the South, sorry, you just have to attend speeches by Yogi ji delivered in the South and you will know what kind of resonance it has with members of the South. I don't deny that BJP's presence in the North and the South are different, they're disparate, but that does not mean that there is no possibility of a saffron wave in the South. It's a matter of time. I don't think they have invested all these years enough. They have started, and I hope they do better, and they actually start providing critical faces. Karnataka, according to me, is a case of several missed opportunities and not the presence of a saffron establishment or a saffron foundation. It does have a saffron foundation, and I hope they regain it and they reclaim it. The entire North versus South divide, especially after the advent of dividend politics, has, Hindi versus Tamil, etc., has existed for a very long time, and now electorally it has also become a theme. The Prime Minister tried to bridge this gap when he travels to Tamil Nadu. The Kashi and Saurashtra Tamil Sangamam are also interesting experiments. Will that help in the saffron march into the South, as it were? More than anything else, I would see that as a march of Bharat, because these speak of civilizational unity. What is extremely crucial as part of this discussion is the attempt of a sore loser to try and divide Bharat on linguistic lines and on cultural lines, and the attempt of another party to take the country together along as a single civilizational and political unit. When people in power or people out of power play games with the fabric of the country in terms of its unity, in terms of its integrity, civilizational integrity more than political integrity, I think it speaks volumes of the kind of irresponsible behavior they're capable of resorting to. It's a scorched earth policy, according to me. So I believe that the initiatives of the BJP in trying to forge unity between the so-called divided North and the South has to be supported, not in the interest of the BJP's political victory, but because it matters for Bharat. In this entire debate of North versus South and the supposed divide, what effect, if any, will the opening of the Ram temple have? What happens on the 22nd of January? Huge. I think it's huge. But as someone who is a believer in Sri Ram, I hope that the institution, that the temple is not reduced to political tokenage and symbolism. It means much more than that, because the Ram Janambhoomi movement, let's say it's been around for at least 500 years, much before the RSS or the BJP or the VHP or anybody came into existence. So that movement is not any movement that any particular party or organization can appropriate. It is a Hindu movement. It is a people's movement. It is, in that sense, a republican movement of a civilization that has been long suppressed. And I hope that with the opening of the Ram Janambhoomi or the Ram Mandir, so to speak, it will herald a new era of confidence. I don't mean domination. I'm not for domination. I'm certainly saying of clear, confident, composed assertiveness, and the fact that it could pave the way for further reclamations of similarly occupied places. Karnataka. He is the brother of Deputy Chief Minister of Karnataka, D.K. Shivakumar, the lesser known of the two brothers. But here he is making headlines for a very familiar reason this election season, viewer, and that is for a comment he made in anger when he says that if the North treats the South in this manner, then the South will have to think about becoming a separate country. He was speaking with a great deal of political anger about funds from the central government that are given to southern states. This has been a point of contention for a very long time. It's been a point of politics and has been a flashpoint and a friction area in federal relations between the central government and southern states across different dispensations for decades together. But D.K. Suresh's comment threatening a separate nation cannot simply be dismissed as political anger now, because it comes in the wake of repeated taunts and pokes and gestures and comments, specifically from the Congress party and its allies, that seem to amplify the North-South divide. It was none other than Rahul Gandhi himself who began this, who triggered this entire North-South politics a few years ago during the Kerala election campaign, when he said he finds South politics more refreshing compared to the North. That had triggered a huge conversation. After the Congress was practically obliterated in the heartland states late last year in Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, winning handsomely in Telangana, various Congress leaders talked about how it is the South. Karti Chidambaram and others had even gone onto social media to praise the South. The assumption and the projection was the South has protected the Congress and democracy while the North has not. All of this once again remained in the realm of politics, except that the Congress was not able to explain away or troubleshoot a virulent comment made by D.K. Suresh's own ally and colleague from the DMK in the Lok Sabha a few days later, when he talked about how the Gaumutra states had voted for the BJP, basically contemptuously dismissing the politics of one entire half of the country. It is in the wake of this poisonous separatist politics, even though it is not rooted in real separatism, but this political anger,
one cannot ignore what DK Suresh has said, because it seems now that the Congress party, after evaporating practically in the entire northern part of the country, save for a couple of places here and there, including Himachal Pradesh, the Congress party appears to have given up on the Hindi heartland. And DK Suresh's comment, far less about political anger, far less about a heat of the moment comment, but probably a pattern of trying to create a narrative of North versus South, which will be very, very important and very significant going into the current election. If they help or vote for the BJP, and also used the kafir comment and said a war has been broken out, a war is broken out in the country, and only kafirs and cowards are scared of fighting. The ones who dare to fight are the ones who survive. The BJP has hit out, calling it naked appeasement and a blatant disregard for the Hindu sentiments. The BJP has also accused Mamata Banerjee of threatening in the name of Allah. जो इन लोग प्रोग्राम करते हैं, सबको बुलाते हैं, तो आज ये मिছিল करने का हमारा यही मैसेज है। अच्छा से कान दिल से सुन लो, हम दिल का बात का बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। See, Netaji Subhash Chandra Bose stood for unity. He had people from all communities in the Azad Hind Fauj. So whether you say Jai Hind or whether you say Jai Sri Ram, I don't find any difference. Jai Sri Ram is not a statement where people should react in a very allergic manner. So I think the Honorable Chief Minister, with due respects to her, need not have reacted adversely to a slogan, whether it's Jai Hind or Jai Sri Ram. So I think this is not the day. हमला चलेगी दीदी। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি মেরে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি বাইরে আউটসাইডার? हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। So you've heard it from Mamata Banerjee. Remember, the BJP was quick to hit out at the TMC Supremo and took to social media to raise very serious allegations against the TMC government and Mamata Banerjee. We heard it from Amit Malviya, we heard it from Suvendu Adhikari say that there was no sadbhav in anything. Mamata Banerjee said that this was just crass communalism. And in the latest now to the BJP's strong objections, a reaction is coming from the TMC. Dr. Santanu Sen of the TMC has also taken to social media to hit back, to respond to the serious remarks that have been made by BJP on social media. In fact, the TMC says that the BJP is spreading fake news. So this is the latest reaction that's coming from Dr. Santanu Sen of the TMC, that the BJP is spreading fake news through social media and then went for hibernation for a long time. Of course, speaking of an incident in 2021, and says it was Mamata Banerjee who was on the road with the message of the dovetailing of religions. Let me quickly go across to Siddharth joining us with the latest response that's coming from Dr. Santanu Sen of the TMC. Yes, Siddharth. So here's what Santanu Sen has actually said. Master of rapists got a befitting reply by the people of Bengal in 2021 after spreading fake news through social media.
media and then went for hibernation for a long time. Mamata Banerjee was again on the road with the message of dovetailing of religions. How's BJP for India to save secular India? So justification in many ways coming from Mr. Shantanu Sen. All right. Remember, the BJP, of course, has been saying, rather highlighting the keywords from the speech that Mamata Banerjee made just yesterday. Yesterday was when the entire country, Siddhartha, saw the Pran Pratishtha of Ram Lalla in Ayodhya. Many thanks for getting us the latest TMC response. The BJP, of course, has been highlighting these keywords of the speech, says it was supposed to promote peace and brotherhood, the rally which was taken out by Mamata Banerjee among different communities. But if you go through the speech closely, the BJP says that this speech was only meant to incite. Adrija is joining us on the phone line.